Roger, both telemetry carriers are on. Roger. हेलो। तो Roger. सुबह सुबह सो गए थे। मुझे अभी भी मैं अभी भी नींद में हूँ थोड़ा थोड़ा। जस्ट उठा हूँ 5:30। आरोहन, यस भैया, मैं आपका बिग फैन हूँ, क्लास 8 से हूँ। अरे फैन वैन कुछ नहीं होता भैया, बट आरोहन 8th क्लास में तुम्हें इतना समझ रहा है, इट्स अ बिग डील। आई डिडंट न्यू शिट इन 8th क्लास। तो इम्प्रेसिव। आजकल मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड है सुपर ब्राइट यंग किड्स का, और मैं भी जस्ट में नोटिस कर रहा हूँ बहुत सारे। हेलो गेमर्स आए। अरे हाँ, वो बॉबल हेड भूल गया, शिट। रहने दो, क्या आज रहने देते बॉबल हेड, छोड़ो। ऑलरेडी 2 प्रोग्राम्स रनिंग है पाइथन के। एक्चुअल नहीं, 1 मिनट, लेट मी ओपन इट, वो ओबीएस में ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा। भाई मैं 4 बजे, अनिकेत सिंह भाई, मैं 4 बजे सोया था लॉन्च के लिए, अभी उठ गया, वाह। इनका आवाज आएगा क्या, क्रिंज? मैं सेटअप कर देता हूँ। मैं अपना वो बॉबल हेड सेटअप कर लेता हूँ। आज सब शांति यार, सुबह सुबह। नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का एनएसआईएल और इसरो के एक और वाणिज्यिक प्रमोशन मिशन के सीधे प्रसारण में। मैं विकास स्वर्णकार और मेरे साथ हैं इंग्लिश कमेंटेटर मिस माधुरी पी। हम यहाँ मिशन नियंत्रण कक्ष से आप सभी दर्शकों के लिए प्रमोशन का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले 14 जुलाई 2023 को हमने इसरो के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण देखा। चंद्रयान 3 मुझे नया प्रॉब्लम मिला, जहाँ पे मेरा पाइथन कोड इंटरफेयर कर रहा है, काइंड ऑफ। ठीक है, आज बॉबल हेड नहीं सेटअप करेंगे, और क्या। रुको 1 मिनट, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तुम्हारे लिए भी गया कि सबके लिए गया? सैटेलाइट जिसे निकट भूमध्य रेखा के साथ अंतक्षेपित किया जाना है। आ गया, आ गया। मुख्य उपग्रह के साथ 6 अन्य सहयात्री उपग्रह इस प्रमोशन यान में अपनी कक्षा के लिए सफर कर रहे हैं। एस्ट्रोबॉट, हाँ एस्ट्रोबॉट आज यह तो मिशन जल्दी आ कुल गया ऊपर। 23 मिनट में पूरा किया जाएगा। तत्पश्चात चतुर्थ चरण को पुनः प्रज्वलित कर अंतरिक्षीय प्रयोग में मेरे को काम लाया ये जाएगा। स्ट्रीम करना ही नहीं था, मेरा मेन एम था वो टेस्ट करना, ये Namaste कोड नया viewers and a good morning to टाइमलाइन you जनरेशन all. का। This pleasant Sunday morning, P2. Switch on the ISRO is pulsar. gearing for the 6th launch of 2023. The launch P2 of pulsar on. PSLV
C56 सत्यम सिंह, रॉकेट DS-SAR के कर्व mission ट्रेजेक्टरी from its फॉलो करने से spaceport फ्यूल Satish कैसे कम Dhawan लगता है Space भाई? Center, किसने Shar, कहा? Sriharikota. I am कौन सा Madhuri, कर्व? joining you live from the Mission हाउ इज द Control टाइम Center ऑफ at the लॉन्च डिटरमाइंड? spaceport, इट इज, अरे वो together आई with my थिंक इट विल co-commentator बी द सन Shri एंगल, Vikas Swarnkar, who will be giving the सन commentary एंगल in फॉर द Hindi. सैटेलाइट्स। This telecast is एंड brought वो to you आई by मीन वो क्या Doordarshan. लोकल टाइम You can चाहते हैं also किसी watch the एरिया के launch ऊपर? on ISRO website, YouTube, ये एसएसओ में जा Facebook, रहा है राइट? and Twitter. P3 switch on the The bus. launch of PSLV ज्ञान टीवी आई एम नॉट C56 श्योर, DSR satellite mission करियर is एडवाइस scheduled to नहीं दे take सकता place मैं, today, आई the डोंट नो, 30th of डिपेंड्स July ऑन व्हाट रोल यू आर लुकिंग 2023 फॉर। at 6:31 hours न्यू Indian लेआउट लुक्स लाइक Standard अ Time कॉम्बिनेशन ऑफ from the स्पेसएक्स first एंड launch जक्सा। pad of Satish हाँ, Dhawan दोनों Space तरफ से Center. इंस्पिरेशन था। This is a dedicated commercial जक्सा के mission इवेंट्स whose launch services छोटे are होते हैं, one आई of मीन the एटलीस्ट rarest जापानीज में diverse तो वो in सब India नीचे Limited. दिखा सकते हैं ऑल इन वन रो। The primary satellite is बट अपने DSR, थोड़े an थोड़े इतने Earth बड़े observation डिस्क्रिप्शंस है satellite दैट वी कांट weighing शो 352 इन वन kilograms, रो, इट हैज टू बी ऑल्टरनेट अप developed डाउन। by Government of Singapore and ST Engineering. Along with this, there are 6 co-passenger satellites varying बस in मिशन का weight from क्या 3 kilograms मोटिव to है? 23 अपना kilograms, कुछ नहीं है, ये बस all एक belonging प्राइवेट to लॉन्च the है सिंगापुर के universities in लामन सिंह। Singapore. तो उनका जो सार सैटेलाइट है DSR is intended to be placed और कुछ in 8, नहीं 1 2 3 6,914 kilometers 4 5 orbit 6 with 6 5 degrees पैसेंजर inclination, सैटेलाइट्स। that is a near-equatorial orbit. नहीं सत्यक, सत्यक भाई, कैमरा इज बेटर आई थिंक, क्योंकि ये फर्स्ट लॉन्च पैड का था, लास्ट टाइम अपग्रेड नहीं था। एस्ट्रोबॉट T2 आज लेट भाई, वो सो गया होगा। PSLV-58 उड़ान है। इस साल हमने जादू सिंगापुर लॉन्च, के यस। ही टेलियोस 2 उपग्रह का सफल प्रमोशन PSLV अरे C55 मेरा द्वारा देखा प्रॉब्लम था। क्या हुआ है? आई सी ओनली एस डॉट 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 एवरीथिंग, PSLV सबके रॉकेट की प्रोफाइल्स यहाँ पे विश्वसनीयता डिस्कॉर्ड का पे। ही फल है कि अब सुमित, तक निसार इससे कब लॉन्च कुल होगा? 423 अगले विदेशी साल? उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया जा चुका है। आइए अब आपको PSLV C56 के इंटीग्रेशन वीडियो का चंद्रयान 3 का क्या है? चंद्रयान 3 का चंद्रयान 3 का अभी एक और बर्न बचा है, जो TLI बर्न होगा, ट्रांसलूनर इंजेक्शन, वहां से वो लूनर ऑर्बिट को इंजेक्ट हो जाएगा। तो वो कब है? आई एम नॉट श्योर, एक मिनट में चेक। वो होना तो था, अच्छा परसों, परसों के आसपास है फिर। जतिन कृष्णा, ठीक है, कैमरा एक्चुअली अच्छा है राइट, मुझे नहीं पता क्यों कंप्लेन कर रहे लोग। मेरा तो फुल एचडी है राइट? हाँ फुल एचडी है। As the viewers might recall, ISRO has launched the prestigious Chandrayaan-3 mission to the moon on 14th of आयुष का July, एक बार 1 just अगस्त को 16 है days शायद ago. लूनर इंजेक्शन। All हाँ systems of Chandrayaan यस, are reported to be in good health. यस A प्रणव series of 5 पाईवाल। earthbound maneuvers have been completed, and translunar injection is planned day after tomorrow, that is गेम्स, हेलो 1st of भैया, आई एम स्पेस August. टेक एंड 12 मंथ्स Presently, कंप्लीटेड Chandrayaan-3 गेम्स। is in 71,351 by एक्सप्लोरर 233 kilometers जेएस, orbit. गुड जॉब फॉर कोड। These are the अरे visuals थैंक यू from the भाई, launch बट view gallery here at इट Sriharikota. वाज ज्यादा Up ये next, था you will कि watch the ऑल दैट integration स्ट्रेस video एंड for अननेसेसरी PSLV वर्क जो होता था C56 हमेशा, DSR mission. रिडंडेंट वर्क, वो एलिमिनेट करना था आई थिंक, जो हुआ सक्सेसफुली। आज काम कर चाहिए प्रस्तुत बस, है संक्षिप्त बिकॉज लॉन्च ये इंटीग्रेशन ओवर वीडियो। 30 मिनट्स अब काम करना आप होगा स्क्रीन राइट? पर अभी देख कोड रहे हैं, विदाउट लैग, विदाउट यह प्रथम स्टॉपिंग चरण का एनीथिंग, प्रथम खंड है। तो देखना है। प्रथम चरण सॉलिड अरे S139 प्रणव, बूस्टर। कौन इसके सी? 5 खंड होते हैं, इसमें से यह प्रथम खंड है जिसे हम वो नोजल ऑरेंज इंटीग्रेशन वाली कहते थी हैं। या उससे पहले यह देखी वो? नोजल के ट्विटर साथ पे देखी वो? संयोजित होकर लॉन्च ऑरेंज वाली फेडोरा में है वो इंटीग्रेशन वो फैसिलिटी में आ डिफॉल्ट थीम जाता ही है। था। इसे और जो ब्लू अनिर्मित कलर टाइप PSLV नियॉन टाइप इंटीग्रेशन था ऑन फैसिलिटी ट्विटर, पर वो संयोजित इवान किया जा स्टार रहा थीम, है। ऐसा कुछ तो है। मध्य में minus 3 25 मिडिल minutes. सेगमेंट के खंड होते हैं। आई थिंक वो डिफॉल्ट थीम था प्रणव, यह तीसरा वन ऑफ मिडिल द सेगमेंट डिफॉल्ट थीम्स जो पूरी सेटिंग्स दक्षता थीम्स के साथ यह में काम आता है किया ना, जाता उसमें है। था, उसमें कोई से भी ही था त्रुटि सर। की कोई गुंजाइश नहीं है। हार्दिक यह है साहू नहीं इग्नाइटर जो कि इस सॉलिड बूस्टर को प्रज्वलित करेगा। भाई, 200 पीपल और यह भी आप देख रहे वेकिंग हैं अप अर्ली मॉर्निंग, SIPVC जो कि बिग डील, बिग डील, प्रणोद सदिश बिग नियंत्रण डील। का कार्य करता है। हाँ प्रणव, अच्छा था, आई आई लाइक दैट वन। मतलब मेरे मॉनिटर पे SIPVC मेरे कलर प्रोफाइल जो है वो एचडीआर का, उस रॉकेट पे अच्छा और दिखता है यॉ वो। दिशा में नियंत्रित करता है प्रथम चरण के प्रज्वलन के दौरान। और यह है RCT टैंक रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर जो कि
रोल दिशा में यान को दिशा नियंत्रण देता है। और अभी आप देख रहे हैं यह इंटर स्टेज कहलाता है। प्रथम और द्वितीय चरण के बीच का यह इंटर स्टेज, इसमें रीट्रो 1 मोटर्स लगे हुए हैं और यह इंजन जिम्बल चेक्स द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें यह विकास इंजन आप देख रहे हैं, इसको पूर्ण परीक्षित कर यहाँ इंटीग्रेशन फैसिलिटी लाया जाता है और प्रथम चरण के ऊपर में संयोजित किया जा रहा है। द्वितीय चरण पूर्ण संयोजित हो चुका है। अब इसे PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी से MST तक लाया जा रहा है। So far, you have watched the first stage and the second stage of PSLV getting integrated in the PSLV integration facilities, and the partially integrated launch vehicle has been moved to the MST. Here, this is PS3 and PS4. The third and fourth stages getting modulated, moduled in a separate integration facility and being moved as a single unit to the mobile service structure. They are being carefully hosted and हाँ, lowered शशांक on पॉइंटेड to the आउट launch vehicle. कि बैकग्राउंड में जो गगनयान का जो इनफ्लाइट अबाउट These व्हीकल are है the visuals वो from the था। clean room for the शुभम prime पांडे, satellite न्यू यूआई लुक्स रियली गुड, थैंक यू DS-SAR. भाई। आई होप इट वर्क्स गुड। उसका टेस्ट आज होगा। मेरे को सबसे For the ज्यादा डर है PSLV, क्लॉक the ड्रिफ्ट का। satellite is being मतलब prepared इवेंचुअली अगर क्लॉक स्लो होने लगा, अगर फ्रेम in ज्यादा टाइम satellite लेने लगे। preparation facilities, मैंने पाई गेम में and it जो will be पूछ रहे थे moved वॉट लाइब्रेरी, मुझे लगा तुम्हें देख के पता to चल the जाएगा, वो launch कोड में दिख रहा pad था। for दिस integration इज स्पाई गेम। in the clean room that is तो ये created जो for this purpose at the है पूरा, दिस इज mobile स्पाई service गेम। tower. एंड देखो, इमेजिन करो, फंडामेंटली दिस इज जस्ट अ बंच ऑफ सर्कल्स मूविंग लेफ्ट। After the आपको बस satellite is पाई गेम में integrated ड्रॉ करना है above सर्कल्स एट अ the minus PS4 22 stage, minutes. प्रॉपर डिस्टेंस the एंड co-passenger मूव देम विथ एक्स satellites, वेलोसिटी। Velox, Arcade, etc. are also placed at their respective places. All this is taking place at the clean room environment. Request all stations change over to channel 2 at T minus 20 Having minutes. completed all the No mandatory checks confirmation for is the needed health to of this control. rocket and the satellite, the payload fairing is closed. The launch vehicle being ready in all respects for the launch, the mobile service tower is receded back and moved to its parking location. COI to ROD, all EAS systems are ready. ROD Roger. जी हाँ, अभी आपने देखा PSLV C56 का इंटीग्रेशन। ROD Roger. RX4 to ROD, range safety systems are ready. ROD Roger. अभियान पूरी तरह तैयार Minus है 21 तथा minutes. अंतिम जांच जारी है। Real-time launch for PSLV C56 DS-SAR mission. TTC Director Roger. PSLV C56 के प्रमोशन की हाँ, सभी ये तैयारियां ये पूरी सी हो चुकी हैं कोरल तथा रूम अंतिम वेरिएंट है, गतिविधियों के इसको पश्चात बूस्टर्स नहीं ऑटोमेटिक है। लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जाएगा। Activity confirm normal गगनयान कब लॉन्च होगा वो प्रमोशन की कोई उल्टी फिक्स गिनती डेट है नहीं। आई मीन 25 लॉन्च घंटे यूनिट इज पूर्व रेडी। शुरू हो चुकी है। copied. अब ओके, हम सबसे पहले प्रमोशन ये से एक 20 बार मिनट 35 सेकंड की दूरी पर हैं। साई चरण भट्ट, वेलकम टू न्यू इस मेंबरशिप। दौरान महत्वपूर्ण कार्य एस्ट्रोबॉट पूर्ण किए जा 34 रहे हैं, मंथ्स, वाओ। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक तंत्र भरत, तथा वेलकम उपग्रह टू को न्यू पावर ऑन मेंबरशिप। करना तथा स्वास्थ्य जांच पूरा करना। तरल नोदक वाले PS2 एंड और SRK, PS4 चरणों में तरल वेलकम टू न्यू नोदक मेंबरशिप। का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। साथ ही संचार तंत्रों का परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है। हाँ, एक्सप्लोरर, आई देखो, मैं ट्रिगर करता हूँ T-10 सेकेंड पे, राइट? Today's launch is the तो इवन इफ 15th द क्लॉक flight इज आउट of ऑफ सिंक, वो PSLV, रीसेट हो Minus जाएगा 20 and the सॉकेट minutes. पर से। Request 17th all mission stations change that over to uses the channel 2. workhorse वाओ यार, PSLV 19। in its core alone configuration. डायरी ऑफ यंग मिथु, मंगलयान 2 अभी Speaking प्लान of the नहीं है, यस। spaceport statistics, आई मीन today's उनका launch will be डिस्कशंस the चलते रहेंगे, बट 90th नथिंग from कॉन्क्रीट। SDSC SHAR and 48th from the first launch pad. So far, ISRO has प्रशांत launched as द्विवेदी, many as पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इट्स, 424 आई मीन satellites ज्यादा for डिटेल्स है नहीं 34 ऐसे जज करने countries. को। Launch of PSLV C56 DS-SAR will add to the numbers. इज द लॉन्च ऑन For शेड्यूल Singapore, ऑफ ISRO इनिशियल has प्लान और इज इट provided launch पुश्ड? services for 20 satellites, including the present नॉट mission. श्योर, The देखते recent क्लॉक आएगा most तब being टाइम PSLV स्क्रीन पे। C55 Telios अरे 2 इवन mission. फॉर PSLV इतना भरा है, काफी सारे स्टूडेंट्स आए। आई भारी थिंक ये संख्या पूरा में ट्रेंड यहाँ बन गया ऑफ
people like उपस्थित हैं colleges taking व्यूअर्स, their students there. लॉन्च व्यूअर्स गैलरी पे छात्रगण भी आए हुए हैं यहाँ 15 पे और minutes. बहुत ही उत्साहित हैं इस लॉन्च को देखने के लिए। PS4 stage to vehicle director. PS4 stage is ready for launch. When will पूरी Aditya गैलरी L1 दर्शकों से launch भरी date? हुई है। August end after Chandrayaan 3 सभी landing. स्कूल के छात्र उनका छात्रा पास यहाँ विंडो उपस्थित। छोटा है, अदरवाइज अगले साल हो जाएगा। वो सोमनाथ सर ने इंटरव्यू में कहा था, देखो। The countdown for PSLV C56 DS-SAR has been 25.5 hours long, during which a concert of activities are carried out for the SFS readiness of Aerospark, like range, Cybertron launch said in vehicle, the chat, spacecraft and Shukran downrange hasn't tracking been stations. approved as such yet. वो गवर्नमेंट The के liquid पास चला गया, वो propellants जब are पैसा serviced देंगे to the तब। launch vehicle stages in the last T-10 hours or more. The onboard batteries are charged and the gas GM bottles हमारे भाई filled with gases for stage functioning are pressurized. The meteorology section ऋषभ obtains जैन, and those records 5 are critical data for committing the those launch 5 are and day engines of of launch गगनयान जो wind सर्विस biasing of मॉडल the पे launch जाएंगे। vehicle. This is vehicle director to mission director. Specifically All उसका the कलर system I'm not sure. parameters of PSLV C56 I don't know. launch vehicle are normal and within specifications. The launch vehicle is ready for PSLV C56 DS-SAR mission. Mission director Roger. अभी अभी यान निदेशक ने यान GS के long कितना परीक्षण के होगा पश्चात स्ट्रेन? यान की जानकारी मिशन डायरेक्टर को दी है। यह पूर्णतः संतोषजनक 1486 seconds है long. और हम उड़ान के लिए आगे जा रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की हाँ, अनुमति भी N प्राप्त की भाई, जा चुकी yes, है। same. मौसम पूरी इसरो तरह का अनुकूल लॉन्च फ्रीक्वेंसी इतना प्रमोशन बढ़ के गया। आई लिए। मीन एनएसएल का टेक्निकली अब एनएसएल हम लॉन्च है उड़ान से 17 मिनट की दूरी पर कि हैं। नाउ हैव टू थिंक ऑफ व्हिच टू स्ट्रीम एंड व्हिच नॉट टू स्ट्रीम। इतना आई हैड नेवर हैड दिस लग्जरी बिफोर। Minus 17 minutes. Timing to control. Timing अर्नब confirmed कुंडू, additional अग्निकुल hold नहीं यार, मुझे भी आई एम Roger. नॉट श्योर व्हाट इज द फुल VLCC1, थिंग। LCC1, please note. Timing confirmed external hold mode. आई डोंट नो एसएफएस LCC Roger. कॉस्ट। PSLC Roger. आई मैं 1 मिनट पानी पी के आया, ठीक है? I'll join in Mission 2 director minutes. Roger. 1 मिनट आगे चल रहा है। I can Forwarding always to mission adjust. director. Range is ready for PSLV C56 DS-SAR launch. Mission director Roger. TTC director to mission director. TTC director confirms readiness of ISRO stations and network for supporting PSLV C56 DS-SAR mission. Mission director Hold Roger. camera. उपग्रह निदेशक, रेंज CCTC निदेशक, टेलीमेट्री data ट्रैकिंग एंड loggers कमांड are on its निदेशक, SHAR-1 and SHAR-2 यान stations. निदेशक ने अपने Copied. तंत्रों की जानकारी मिशन निदेशक को दे दी है। Minus 16 minutes. Oh, This is mission director. Mission readiness review and launch authorization board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C56 DS-SAR mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and distract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C56 DS-SAR mission at 6:31 hours IST today, that is 30th of July 2023. All stations note. जी हाँ, अभी Mission आपने director सुना has given authorization for मिशन निदेशक श्री launch. एसआर बीजू ने SDS servers लॉन्च के activated. MC ऑटोमेटिक confirmed लॉन्च data from सीक्वेंस जारी SHAR-1 करने and का SHAR-2 Minus अनुमोदन दे 15 दिया है। minutes. okay. I think we're almost Based on there, the right? I think authorization 2 from seconds mission का difference director, है बस। vehicle director hereby authorizes to I'll initiate drink water and automatic come, launch ठीक है? sequence for the launch of PSLV C56 DSR mission at 6:31 hours IST today, 30th July. Automatic launch sequence initiated for PSLV C56 DSR mission. LSA hardcore in auto You've mode. just watched on your screens Mission Director Sri S.R. Biju giving his clearance and authorizing the launch, and the automatic launch sequence will now run, that is T-minus 14 minutes onwards from the ground computers to check very important systems of the launch vehicle. Close to the scheduled launch time, the control is passed on to the onboard computers.
Speaking about the launch vehicle, PSLV is the workhorse rocket for ISRO, having a legacy of Minus ISRO's 14 own and minutes. commercial missions to a PS2 Okay, variety of I'm back. orbits. By the way, thanks Based to on payload Astrobot weight and 42 orbit, and the Chitrak configuration bhai, is Jalu bhai adapted as for regular, modding this thing. XL, QL, DL कभी कभी or बहुत CA. irritating हो जाता है stream. CA Especially represents मैंने core देखा है alone post or launch. I no don't know, post strap-on launch suddenly version लोग of political and PSLV. religious हो जाते हैं. It has a gross liftoff I mean सुबह mass सुबह of now the audience won't be like that. 229 tons. जो normal PSLV is a hype four-stage वाले launch streams होते हैं vehicle ना with उनकी बात कर alternate रहा हूँ. solid and liquid stages. तो उन पे इन पे The बहुत pressure first आ जाता है stage फिर is mods solid को इस time propellant मेरा मतलब. stage called S139 with 139 tons of HTPV-based प्रणव solid open loop propellant. guidance meaning Second आपका stage rocket का has a output won't be hyperbolic taken as earth factor. storable propellant आप मतलब combination hard of code करते हो अपना कि UH-25 इस and altitude पे इस N2O4 position पे यहाँ with ये pitch 41 करो या tons वो जो propellant करना loading. है. Third stage Hard is coded. solid propellant Anand stage Lalwani for a having good a launch. Kevlar Okay, filament sure. wound case with अरे first super chat है आनंद 7.65 का. tons Oh, propellant loading. बहुत The fourth मेहनत गई stage होगी. is a liquid propellant Oh, based first stage move is always with 1.4 very tons difficult. propellant. The PSLV stands 44.4 meters tall. 300 PS4 people morning 6 o'clock. PSLV C56 DS-SAR I want to know, मिशन का ये तुम्हारा घटनाक्रम कुछ इस एक मिनट में प्रकार पोल होगा. लेता हूँ पोल. पूर्ण Is this your संयोजित normal तथा time of परीक्षित waking up? परीक्षण के पश्चात T0 पर PS1 कोर स्टेज S139 Yeah. बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा. यह चरण करीबन 109 सेकंड्स तक जलकर 4800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को 50 किलोमीटर की ऊंचाई Especially for तथा launch or 1.4 किलोमीटर प्रति सेकंड का nor वेग प्रदान करेगा. इस चरण के दौरान ही normal प्रथम time चरण of waking को up. पृथक I करने के want to know पश्चात मेरे द्वितीय इसमें चरण का कितने लोग हैं जो ऐसे सुबह सुबह उठते हैं. प्रज्वलन PS3 शुरू हो जाएगा. मैंने पोल किया पोल. द्वितीय चरण Minus के 12 दौरान minutes. ऊष्मा कवच यानी पेलोड पोल पे फेयरिंग वोट को करो. भी यान से पृथक कर दिया जाएगा. द्वितीय चरण का प्रज्वलन अरे इसरो रेट 152 वेन सेकंड इसरो तक रेट चलेगा T minus 5 minutes और यान पे करते हैं ना. इस चरण के दौरान T minus 5 सत्तर. 169 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 4.23 देवप्रतिम किलोमीटर प्रति गगनयान सेकंड का वेग program is प्राप्त कर overtime चुका these days. होगा. अरे द्वितीय हाँ, चरण के पृथकन I के 1 think सेकंड के पश्चात गगनयान will तृतीय चरण happen का just like प्रज्वलन शुरू Chandrayaan हो 3. मतलब जाएगा. suddenly आ यह जाएगा चरण वो. फिर से ठोस And नोदक we वाला won't be चरण able है to take the feel of और it, kids here. इसे उच्च निष्पादन HPS3 मोटर कहा जाता है. It will be like यह Chandrayaan 120 3. सेकंड तक प्रज्वलित Delay, रहकर delay, delay, and 240 it just किलोन्यूटन का happens प्रणोद suddenly. उत्पन्न करेगा. इस समय यान की ऊंचाई 220 किलोमीटर Wow. तथा सापेक्ष गति More than 7.24 50 किलोमीटर से प्रति सेकंड हो 58 जाएगी. whatever percent. I'm फिर शुरू impressed होता है कि कोस्टिंग फेज जिसमें almost half बिना the किसी people, प्रज्वलन this is their के normal यान time of waking प्राप्त up. गति से I also want to do this. प्राप्त संवेग से 115 किलोमीटर की RC अतिरिक्त ऊंचाई deactivation. प्राप्त करेगा और They यान की did, गति में they मामूली literally did गिरावट 3 आएगी. SMPS firings in 2 फिर days. यान हाँ. से तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा. यान What about इसके Skyroot 263 rocket सेकंड के launch? पश्चात जय ही मगर. चतुर्थ चरण Okay, को I'm प्रज्वलित ending किया poll. जाएगा. I'm ending poll in at T minus 8 minutes. So whoever hasn't voted, चतुर्थ please vote. चरण अंतिम चरण है PSLV का जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण GK है. भाई मैं बैंक इसमें में मॉन बैठ के और इतना MMH सुबह बैंक में काम. ईंधन का प्रयोग किया जाता है. यह चरण Roger 272 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर Sure. 14.6 किलोन्यूटन के प्रणोद के साथ यान को उद्दिष्ट कक्षा में लेकर जाएगा जो कि इस मिशन के लिए है 536 किलोमीटर PS2 activation prime chain. और इस Prime chain, दौरान sorry. गति होगी 7.08 किलोमीटर प्रति सेकंड. DSSAR मुख्य उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा. तत्पश्चात क्रमशः न्यूलियन और 12 Sunday स्ट्राइडर को कैलेशिया really 2 Sunday को. स्कूप 2 Why आर्केड और SSLV was वेलॉक्स not used AM because नामक the उपग्रहों को payload is Minus heavier. 10 minutes. उनकी स्थापित कक्षा में स्थापित किया जाएगा. Twitter. Pranav. इतना होने के पश्चात इस यान में चतुर्थ चरण को पुनः प्रज्वलित कर अंतरिक्षीय प्रयोगों में काम लाया जाएगा. We are 9.5 minutes from the scheduled launch time. As we await the launch, let me tell the audience the major flight events that will be taking place in the PSLV C56 DS-SAR mission. This core-alone version of PSLV will inject 7 payloads in a mission lasting 23 भाई minutes. मैं तो खेलने जाने वाला था इतना सुबह क्या At T0, cricket the core match we are at S139 10 minutes ignites yes and the launch vehicle okay I'm ending lifts poll off. ठीक है I'm ending poll By 109 seconds, the whenever first it goes T stage minus would 9 have minute T completed minus 8 its minute operation
and रिपोर्ट separates हम from बैंक the में चोरी ongoing कर रहे launch थे vehicle. वाह At this instant, the launch vehicle would have reached an एस्ट्रोबॉट altitude of 51 minus 9 kilometers. minutes. SITVC BPV open. Soon afterwards, the second stage ignites and carries the rocket up to 169 kilometers altitude in its Anag dash operational no time of no idea 152 bhai no one seconds. knows that except Skyroot During the even they might operation of not know second properly stage, the ये launch सब में vehicle uncertainty बहुत clears होता the है dense इतने बड़े atmosphere, टेस्ट में so the closed loop guidance is initiated and the payload fairing is separated. The third stage ignites soon after the separation of second stage. After operation of Anag 120 I answered your seconds, question don't the spam please PS3 burns out but continues to coast along for another 200 seconds. By this instant, the altitude of the launch vehicle is 335 kilometers. अग्निकुल का लॉन्च कब The होगा fourth नहीं पता stage, PS4, together with the वो payload, कुछ बोले नहीं continue to ऑफिशियली coast for another 263.3 seconds. यार After the ये लोग burnout ना of the मेरे को third फोर्स कर stage, रहे टू coast 3 एनेबल phase minutes. adds an स्लो मोड ये altitude सुबह of सुबह स्लो मोड नहीं पसंद 244 करना kilometers to the launch vehicle, while its relative velocity reduces a little. The fourth stage ignites at 14 minutes into the flight and operates for 272 seconds, during which the orbital conditions are achieved for the ignition of prime satellite Shubham DS-SAR Mishra that and is 6 sad co-passenger satellites. 400 viewers The intended early morning orbit is 6:23 good 6,914 morning kilometers to circular all orbit at yeah 5 good night degrees I don't know inclination. मुझे पता है The order काफी of सारे लोग separation of other दूसरे satellites is देशों से दिखते Neolon, हैं Orbit अपने 12 अपने Strider, सब्सक्राइबर्स अपने ही लोग हैं followed by बट Glacia, डिफरेंट ज्योग्राफी then the Scoop 2, then Arcade, and finally I Velox leave for AM. university at 8:30 but for Thereafter, some reason I the always upper wake up stage once at is 6 a.m. then maneuvered go to a to lower sleep again orbit. till 7:30 so that was helpful for today देबू Minus भाई 7 minutes. so अब हम उड़ान से 7 मिनट की दूरी पर हैं। ISRO 12 के लाइव ऑटोमेटिक लॉन्च don't सीक्वेंस don't जारी you है। think they should यह करीबन modify 14 मिनट PSLV and चलता है upgrade the और avionics इस दौरान if it ain't broke पायरो don't लाइन्स fix को और सेफ वो से अपग्रेड आर्म करते मोड में रहते लाया छोटे जाता मोटे है तथा अभी उन्हें सभी प्रॉब्लम है संचार see when तंत्रों की ISRO आंतरिक handled जांच की जाती है। PSLV वो they could do these incremental small changes but now that it is with NSIL ISRO is forced to kind of freeze the configuration right especially once it goes into private manufacturing ISRO will have जैसा कि to हमने find a way बताया, to freeze the design PSLV प्रमोचन यान की and no more कुल changes 57 so उड़ानें वो हो चुकी that हैं। could be a यह drawback 58वीं उड़ान होगी। PSLV Yes, की उसकी Gary Goswami. विश्वसनीयता Yep, के I'm कारण watching इसरो from का USA, वर्क हॉर्स but I've भी been कहा जाता following है। since यह quite a few years. Thank विश्वसनीयता you, सिर्फ brother. All प्रमोचन in यान journal. की नहीं बल्कि उस वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यवस्था तंत्र की भी है जो हर बार इस मिशन को सफल करने में सक्षम है। Minus 6 minutes. PLV close, PSLV PPV रॉकेट की close. विश्वसनीयता गुणांक Okay, T minus 5 पे we will rate, ठीक है, we will 97.6% है। rate ISRO PS to actuatron. and मैं हर भी एक log in कर सफलता के लेता पश्चात हूँ. इस I will गुणांक also में join. वृद्धि होती रहती है। External power is withdrawn. Vehicle is fully internal battery power. PSLV न सिर्फ विश्वसनीय है, यह बहुमुखी भी है। प्रथम चरण के प्रणोदानुसार Flight course and PSLV loading 4 initiated. मुख्य संरूपण में है, PSLV XL, QL, DL तथा CA, जिसमें क्रमानुसार 6, 4, 2 और 0 स्टेप ऑन मोटर्स Flight संलग्न course and रहते loading हैं। completed. वर्तमान प्रमोचन यान PSLV C56 CA कोर अलोन संरूपण वाला यान है। We are close to 5 Minus minutes 5 from the minutes. launch. Okay, let's read. मैं कर रहा हूँ ये. ठीक है, let's raid ISRO. MC confirms As a radar matter data. of fact, the uppermost stage of the rocket usually goes into the same orbit अरे as the यार, satellite the mission injects. The fuel left unused in the stage is vented and the stage is passivated. Passivation is a process of removing stored energy from space vehicle to reduce the risk of high energy release such as explosions or fragmentations. थोड़ी देर के लिए However, सही the यहाँ spent पे stage is वो an orbital debris itself. The जो orbital इनका कमेंट lifetime सेक्शन of है the वो debris क्लीन तो हो is very जाए. long in certain orbits. As a अरे मैं responsible GS space डालता हूँ agency, अपने कीबोर्ड ISRO पे is जी carrying out जी a कोलन एस change in कर the देते orbit हैं of जी fourth एस्टेरिक्स stage जो भी है. after the accomplishment of mission. From 536 kilometers altitude,
The fourth stage, PS4, will be brought down to about 300 kilometers altitude by firing the orbit change -4 thrusters अरे minutes. इसमें twice. आई थिंक मेरा डिलीट हो रहा है कमेंट टेस्ट First टू नाइस firing पोस्टेड is नहीं नहीं scheduled नहीं हो रहा नहीं हो 45 रहा नहीं हो minutes into the flight, and second firing is scheduled 90 minutes into the flight. The रहा ओके re-entry चलो आ into जाओ Earth's वापस बहुत हुआ atmosphere from 300 हमने उनका वॉचिंग बढ़ा kilometers दिया altitude is likely to be in the order of weeks or अरे a month. इट्स टेक्निकली अपोजिट आई गेस चलो ठीक है Though the वापस burns वापस of आओ OCT will be tracked Power by and valve ISRO's batteries are ground on. stations, अरे ये the live कैमरास क्यों transmission अपग्रेड will नहीं किया not अब be तक available for the viewers. Onboard computers in flight mode. संदेश GS how सभी many दर्शक satellites you are carrying this time प्रतीक्षा में I think इस it's 1 2 प्रमोचन के 3 4 5 6 अब हम 7 प्रमोचन से 3 मिनट 20 सेकंड की दूरी पर हैं। ओके हम लोग लॉन्च अप्रोच कर रहे हैं अभी मैं इसरो का वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू होने के पश्चात रॉकेट पूर्णतः स्वचालित होकर अपना आंतरिक जांच जारी रखता है प्रणव 6 तथा कैसे T0 DSR पर नोलन ऑर्ब गैलेसिया स्कूप यह आर्केड -3 वेलो T minutes. माइनस 0.3 सेकेंड्स पर सर्वप्रथम RCT का प्रज्वलन हम देखेंगे और तत्पश्चात क्वेश्चन T0 द्विवेदी पर टफ कोर क्वेश्चन बूस्टर आई थिंक S139 नेक्स्ट सॉलिड तो बूस्टर का नहीं प्रज्वलन शुरू होगा। अर्ली नेक्स्ट ईयर शशांक so normal today yes why don't ISRO stream with countdown graphic I don't know We are 2.5 minutes from the scheduled launch time, and the eagerness building up in the control center here. जैसा कि आपको बताया गया इस प्रमोचन मिशन में सभी 7 उपग्रहों के प्रमोचन के पश्चात PSLV C56 के they gain चतुर्थ 1 चरण kg को of उसमें payload for लगे every ऑर्बिट day करेक्शन 60 kg they माफ remove it कीजिएगा ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स को इतना प्रज्वलित अच्छा कर उसे रेशो ओके 536 किलोमीटर जिनको नहीं पता इफ यू सी वो की कक्षा एरोडायनामिक से स्टेबिलाइजर्स भी 300 थे वो किलोमीटर फेक की साइड कक्षा -4 बूस्टर्स वृत्ताकार काइंड minutes. ऑफ कक्षा थे में व्हिच इज नो 2 मोर देयर चरणों ऑन में लाया PSLV जाएगा। CA अगर आप देखो इट्स जस्ट टू तो यह प्रयोग भावी जब मिशन पूछना होगा के नेक्स्ट डी टाइम ऑर्बिट वी कैन आस्क सीक्वेंस दिस के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम तकनीक प्रदर्शन के रूप हाउ में मच किया जा रहा पेलोड यू है। गेन मतलब रेशो क्या है ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस सुचारू रूप से जारी है। सभी यार ये दिस गतिविधियां कैमरा इज सामान्य जस्ट बैड संतोषजनक तरीके से पूर्ण हो रही हैं। दिस इज गुड दिस इज नाइस 7 सैटेलाइट्स में 7 ही कहा था टाइमर इज +5 ठीक है टाइमर रीसेट हो जाएगा राइट अब हम प्रमोचन से 1 मिनट की दूरी पर हैं। -1 minute. ओके -5 करता हूँ -55 seconds. All charts are armed. ओके आई एम यह म्यूटेड पूरी तरह -40 माई स्वचालित seconds. है। Sequencers are armed. इसमें ऑनबोर्ड -45 कंप्यूटर seconds. आंतरिक जांच द्वारा सभी गतिविधियां -40 निश्चित कर रहे seconds. हैं PSTV और HPP open. T0 पर खुद ही S139 बूस्टर के -30 प्रज्वलन seconds. का कमांड इशू करेगा। -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PSTV SPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift-off normal. Event tracking. And we have a liftoff. The PSLV C56 first stage burning bright and the thrust is reported to be normal. जी हाँ, अभी अभी आपने देखा PSLV C56 प्रमोचन यान Stage का performance normal. सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। यह करीबन 110 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान यह 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है।
Normal thrust of PS1 stage 4,800 kilonewtons. The stage is 20 meters long and 2.8 meters in diameter. इस दौरान रॉकेट अपने अधिकतम गति दाब से गुजर रहा होता है। यह क्षेत्र काफी कठिन होता है एक रॉकेट के लिए, लेकिन इसमें SITVC और RCT की मदद से रॉकेट को अपनी दिशा बनाए रखनी होती है और वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और प्रथम चरण का प्रणोद जारी है। Presently, the launch vehicle trajectory is being tracked by SAR stations. Operational duration for PS1 is 109 seconds. Stage separated, second stage engine started, closed loop guidance initiated. Plus 2 minutes. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक वाला विकास इंजन वाला चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are 2.5 minutes into flight and the rocket is at an altitude of 76 kilometers. The second stage has commenced its operation. It's a liquid stage that has 41 tons of propellant loading. Fuel is 2H25 and oxidizer N2O4. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ इस चरण के दौरान ही पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया जाएगा तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत चला जाएगा। The legendary Vikas engine powers this stage and generates a maximum thrust of 800 kilonewtons. PS2 stage is 12.8 meters long and 2.8 meters in diameter. In the meantime, the rocket clears the dense atmosphere. It no longer needs to be steered to reduce aerodynamic loads and it can now be guided based on final destination with respect to its current position, marking the beginning of closed loop guidance. No dense atmosphere around, no need to carry the extra weight to protect the satellite. Payload fairing have been jettisoned. ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है, जिसमें सेंसर्स की मदद से वर्तमान की स्थिति का पता लगाकर रॉकेट अपनी अभिवृत्ति नियंत्रण तथा उद्देश्य कक्षा की ओर जाता है। PSLV का द्वितीय चरण का निष्पादन जारी है। Second stage performance normal. यह लगभग 150 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। Second stage separated, third stage ignited. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है कि द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल समाप्त कर पृथक हो चुका है तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। परफॉर्मेंस नॉर्मल। तृतीय चरण HPS-3 के नाम से हम जानते हैं। यह इस चरण में 7.6 टन का प्रणोदक होता है और यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। The third stage has commenced its operation. It is a solid propellant stage. Current altitude 180 kilometers, ground range around 480 kilometers. Maximum thrust that the stage develops is 250 kilonewtons. It has 7.65 tons propellant loading. जी हाँ, यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है जिसे उच्च निष्पादन के लिए बनाया गया है। इस चरण का कार्यकाल लगभग 120 सेकंड का होगा। थर्ड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। इस चरण के अंत तक यान
220 किलोमीटर की ऊंचाई तथा सापेक्ष गति 7.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त कर चुका होगा। Plus 6 minutes. SAR station continues to track. Port Blair station has just started to acquire the rocket's position. Third stage action completed. तृतीय चरण का निष्पादन समाप्त हो चुका है। अब PS3 स्टेज यानी तृतीय चरण और चतुर्थ चरण संयुक्त रूप से यान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसे हम PS3 PS4 कोस्टिंग फेज बोलते हैं। The third stage of PSLV has completed its operation, but it will coast along with the ongoing rocket. In the Vehicle meantime, performance normal. no thrust is being imparted Plus by the 7 minutes. rocket, but the rocket is being steered. SAR and Port Blair stations continue to track. The combined coast phase lasts for 200 seconds or until 9 minutes 42 seconds into flight. As the rocket is not thrusting, its relative velocity reduces. Meanwhile, it gains altitude. PS3 PS4 स्टेज का कोस्टिंग फेज जारी है। इसमें बिना किसी प्रज्वलन के यान प्राप्त संवेग से 115 किलोमीटर की ओके, अतिरिक्त अभी वो ऊंचाई कोस्ट प्राप्त हो रहा कर है। लेगा। मुझे पता है हर बार एक क्वेश्चन यान आता की है। गति में देखो, कुछ कोस्टिंग के गिरावट आएगी। मल्टीपल रीजन है, उसमें फिर से एक है यान से कि तृतीय चरण को सिंस ये सॉलिड बूस्टर है, इट हैज सम टेल ऑफ थ्रस्ट। टेल ऑफ थ्रस्ट मतलब तृतीय चरण के पूरा जलने के बाद भी थोड़ी चीजें होती है जो पश्चात जलने कंटिन्यू चतुर्थ करते हैं चरण का कोस्टिंग और फेज थोड़ा जारी थोड़ा रहेगा। स्मोक आता है, यह 263 सेकंड जिसकी तक वजह से जारी रहेगा। Vehicle उसको performance थोड़ा एक्स्ट्रा normal. वेलोसिटी है। और अगर वो अभी सेपरेट करते हैं तो पॉसिबल है कि वो वापस आके हिट सामान्य करेगा स्टेज प्रदर्शन को। करते हुए दिस इज वन ऑफ द रीजंस। अदर रीजन सापेक्ष कुड बी गति सिंपली 7.17 आपका लॉन्च किलोमीटर प्रोफाइल, प्रति यू हैव टू सेकंड, वेट फॉर द नेक्स्ट ऊंचाई बर्न। 287 किलोमीटर। एंड इफ अगर आप एटमॉस्फेयर के एज पे हो तो इट्स बेटर टू हैव मोर वेट, क्योंकि मोमेंटम लॉस कम होगा। तो काफी सारे रीजंस है, बट द मेन रीजन इज टेल ऑफ थ्रस्ट एंड लॉन्च प्रोफाइल। To put the coasting phase in perspective for the viewers, the first stage carried the rocket till 51 kilometers. Second stage for another 118 kilometers. Third stage, next 51 kilometers, and combined coasting phase will add 118 kilometers altitude. Even after the separation of PS3, which is the next flight event, coasting of fourth ये stage भाई and इतने बार होता है payloads इंडिया में फॉर लॉन्च, continue for Vehicle इसे यहाँ घर performance 263 भाड़े पे लेना normal. seconds. पड़ेगा। Brunei Station 2 has started to track. ओके देखो, दिस इज द एज केस फॉर माय कोड। यह मिशन है क्या पूर्वी दिशा का मिशन है। इसमें प्रणव जीएस पीक भू-स्थित ग्राउंड वाचिंग स्टेशन 9000 शार, समथिंग। पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने यहाँ और पे बयाक देखो हम तक स्टेज 3 आंकड़े उपलब्ध बर्नआउट इज करा अबाउट रहे टू गो हैं। ऑफ द स्क्रीन। Third stage separated. एंड नेक्स्ट इवेंट जो है अभी अभी वो पुष्टि की बहुत गई, दूर है, तृतीय चरण को स्टेज 4 इग्निशन। सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है तो अभी थोड़ी देर के लिए तथा दिस चतुर्थ टाइमलाइन विल चरण बी का एम्प्टी। कोस्टिंग फेज जारी है। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ आई नीड टू Plus सॉल्व 10 दिस, minutes. मुझे सम सॉर्ट ऑफ डायनेमिक स्केलिंग डालनी पड़ेगी कोड में, Vehicle performance normal. जो पिक्सल वर्सेस ये यान डिस्टेंस सामान्य कैलकुलेट करे निष्पादन और करते हुए डायनेमिकली स्केल अपने करे। अपेक्षित बट पथ वो का सिंपल अनुकरण नहीं है, करता हुआ क्योंकि जा रहा जो है। जैसे मैंने कोड लिखा है, इट प्री लोड्स ऑल द डेटा इंक्लूडिंग ऑल दिस डिक्शनरीज एंड यान की अरेज। गति 7.09 किलोमीटर प्रति सेकंड तो ये तथा एक और ऊंचाई इशू है 354 किलोमीटर। पोटेंशियल, देखना होगा। या तो आफ्टर वन गोज आउट ऑफ Current स्क्रीन आई altitude कैन हैव लाइक अ 359 फ्लैश एनिमेशन ऑन kilometers. टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट, सो शोइंग की नेक्स्ट इवेंट इन सो मेनी इवेंट मिनट्स, समथिंग लाइक दिस, क्योंकि DSR अभी स्क्रीन उपग्रह खाली हो गया। सिंगापुर सरकार द्वारा ST इंजीनियरिंग
द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। प्रणव, इस आज मिशन से की पहले पीक वॉचिंग डी सिंगापुर है के लिए PSLV 750 C55 744। द्वारा TLS-2 का सफल प्रक्षेपण किया जा चुका है। DSR एक दिव्यांश सिंथेटिक अपर्चर मौर्य, रडार लिए दिव्यांश हुए मौर्य, है जो वेलकम टू कि किसी भी मेंबरशिप। मौसम और किसी भी ऋषभ जैन, समय आप तो वेटरन हो। 1 मीटर के रिजोल्यूशन के साथ भूप्रेक्षण में सक्षम होगा। यह सैटेलाइट इमेज सिंगापुर सरकार के विभिन्न विभागों के लिए सहायक होगा। ST इंजीनियरिंग भी इसमें अर्जुन वाणिज्यिक गरवा, यस, ग्राहकों के लिए इससे बट मल्टी मोडल मोर और कॉम्प्लिकेटेड देन उच्च प्रतिक्रियाशीलता इमेजरी का प्रयोग कर अपने उपभोक्ताओं को प्रदान करेगा। साहिल Vehicle खान, बट हाउ performance विल दे एडजस्ट normal. ऑर्बिट इन, नहीं, फाइनल स्टेज इज लिक्विड, फोर्थ स्टेज इज लिक्विड, so they can always fine tune orbit. वर्तमान Who में is चतुर्थ that? फेज का Sandesh is from कोस्टिंग फेज Singapore. जारी है। I mean, वो Singapore government. Plus 12 minutes. PSLV C56 कुल 7 निर्धार लिए हुए है। इसमें Okay, मुख्य finally उपग्रह on सिंगापुर के screen आ गया DSR next event. भूप्रेक्षण उपग्रह है। अन्य हैं 23.6 kg के आर्केड, 23 kg का वेलॉक्स AM और 13 kg के ऑर्बिटल स्ट्राइडर। अन्य 3 नैनो सैटेलाइट्स जिनका भार 10 kg से कम है, यह गैलेशिया 2, न्यूलियन नामक नितभार हैं। इन सभी सहयात्री उपग्रहों अच्छा, को okay, निम्न जितिन भाई। कक्षा में स्थापित किया जाना है। NSIL. Okay, we are Fourth halfway through the stage entire and the mission. payloads currently As you can coasting. see from the progress bar, screen के ऊपर नीचे. Current altitude is 432 Plus kilometers. 13 minutes. Vehicle performance normal. कोस्टिंग फेज के दौरान चतुर्थ चरण में लगे हुए थ्रस्टर्स की मदद से पिच या रोल कंट्रोल किया जाता है। The prime satellite for the Space Look mission, Hindi. DSR, Welcome. is developed under a partnership between Defence Science and Technology Agency of Government of Singapore and ST Engineering. Once deployed and operational, it will be used to support the satellite imagery requirements of various agencies within the Government of Singapore. Single pie network sockets for ST what? Engineering will use it Network for sockets user only multimodal to sim and timer. high responsiveness imagery and geospatial services for their customers. DSR carries a synthetic aperture radar Plus payload 14 minutes. developed by Israel Aerospace Industries. This satellite can provide all-weather day and night Fourth coverage. stage engine started. चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह चतुर्थ चरण अंतिम चरण है PSLV का, जो मुख्य उपग्रह और सभी नेतभारों Okay. को उनकी वो उद्दिष्ट इसरो कक्षा में सेपरेट लेकर में जाएगा डिस्कशन चल रहा तथा है कि there was a अंतक्षेपित cow Stage करेगा। and a performance dog normal. near the launch pad. हम चेक करेंगे, ठीक है? Fourth आफ्टर stage ये has लॉन्च के बाद commenced हम चेक its करेंगे. operation. Twin engine based pressure fed stage developing a thrust of 7.4 kilonewtons. हाँ, विपुल वर्तमान महाजन, में यस. गति 6.94 तो ये किलोमीटर दिस प्रति ग्राफ्स, सेकंड ये ग्राफ्स भी तथा पहले ऐसे ऊंचाई कैमरा पॉइंट करके 481 दिखाते थे. किलोमीटर। अभी ये स्ट्रीम का पार्ट हो गया. आई होप वो जो एनिमेशन है वो भी स्ट्रीम का सर्वप्रथम पार्ट हो. Plus तो 15 DSR minutes. मुख्य उपग्रह का इंक्रीमेंटल अंतक्षेपण किया इम्प्रूवमेंट्स है, जाएगा। विच इज गुड. यह 536 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में होगा। The fourth stage is also provided with reaction control system thrusters for attitude control, and orbit change thrusters will fire post-mission to Fourth reduce stage performance altitude normal. of the spent एक stage to मिनट. aid in early re-entry. Speaking about this PS4 जल्दी क्यों payloads इग्नाइट taking हुआ? ride in this mission, the first satellite to be separated is DSR. Why? अरे स्टेज 4 इतना जल्दी इग्नाइट क्यों हुआ? This satellite can provide
all-weather day and night coverage and capable of imaging at 1 meter resolution at full polarimetry. It weighs I 352 am kilograms. The second satellite, New Leon, इतना is an जल्दी acronym for New Space 16 minutes. LoRaWAN Internet of Things Network. या तो हमें गलत इंफॉर्मेशन दी It's a थी 3U nanosatellite developed by New Space. It is a seed satellite for a LEO equatorial constellation providing ये continuous तो मतलब कुछ गड़बड़ है LoRaWAN IoT services. या तो उन्हें प्रोफाइल चेंज कर दिया आफ्टर मेकिंग The ब्रोशर third satellite, Orb 12 Strider, will carry the Fourth world's stage first performance अरे multimodal normal. टोटली पॉइंटलेस वीडियो, इट इज नॉट all-electric लैगिंग, इसरो ने propulsion यही दिया engine था featuring subsystems from बट फॉर Singapore-based सम रीजन ELINA, Orbital Astronautics and Aurora Propulsion Technologies. जल्दी हुआ ऑफ 12 स्ट्राइडर, इसमें यह 13 केजी का उपग्रह या है तो जो गलत एक इंफॉर्मेशन स्मॉल दिया सैटेलाइट है। Plus इस 17 उपग्रह minutes. को भावी पीढ़ी के प्रोपल्शन सिस्टम का तकनीकी प्रदर्शन के रूप में प्रमोशन किया जा रहा है। इसमें पहली बार मल्टीमोडल ऑल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इंजन का प्रयोग किया जा रहा है और इसमें मल्टी स्टेज इग्निशन, कॉम्पैक्ट हॉल थ्रस्टर्स और आर्म रेजिस्टर जेट्स भी लगे हुए हैं। अभिजीत, नेटवर्क सॉकेट फॉर सिंकिंग द टाइमर। Devapratim, Fourth that purple satellite line is is mission progress, Glacier total 2, mission is progress. an educational 3U nanosatellite by National University of Singapore. Its main mission is to perform an inter-satellite link with Telios 1. गैलियस 2 एक 3U Fourth साइज stage का एजुकेशनल performance नैनो normal. सैटेलाइट है जिसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा निर्मित किया गया है। इस उपग्रह का प्रमोशन पूर्व में भेजे गए टेलियोस 1 से अंतर उपग्रहीय संचार पथ का निर्माण करना है। यह अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए बहु स्पेक्ट्रमी इमेज लेने में भी सक्षम है। वर्तमान में चतुर्थ चरण प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। कुछ ही क्षणों में उपग्रह के उद्दिष्ट कक्षा की स्थितियां प्राप्त Arish, होते I ही can move my timeline left. करो क्या DSSAR move? उपग्रह को अंतक्षेपित किया जाएगा। PSLV कट ऑफ आने दो। The next satellites are Scoop 2, Arcade and Velox AM. Scoop 2 is a 3U CubeSat designed and developed by a student team of Satellite Research Center, Nanyang Technological Fourth University, stage thrust Singapore. cutoff. Okay, I'll just move my timeline, ठीक है, और क्या कर सकते हैं? Arcade is a 27U microsatellite. Satellite injection conditions are achieved. So the time is off, उपग्रह जो के इसरो ने अंतक्षेपण दिया की है। स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब कुछ ही क्षणों में DSR उपग्रह जो कि मुख्य उपग्रह है इसका अंतक्षेपण किया जाएगा। उद्दिष्ट कक्षा है 536 किलोमीटर। सात 7.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। ISR satellite separated. और यह हर्ष का पल यहाँ पर इस मिशन के मुख्य उपग्रह DSR को Satellite separated. अंतक्षेपित कर दिया गया है और इसके तुरंत बाद ही न्यू लियोन भी इस यान से पृथक हो चुका है और अपनी कक्षा में स्थापित किया जा चुका है। The prime satellite for PSLV C56, that is DS-SAR, has been placed in its intended orbit. Thereafter, the second satellite, New Leon, also has been separated. इस घटनाक्रम में अगला है ऑर्ब 12 स्ट्राइडर उपग्रह का अंतक्षेपण। 5 more injection events awaited. Next in line is Bharat, हाँ, Orb it 12 seems like Strider. 12 Strider satellite separated. ऑर्ब 12 स्ट्राइडर उपग्रह को भी अंतक्षेपित कर दिया गया है उद्दिष्ट कक्षा में।
We have a confirmation of हाँ the हाँ Gaurav, separation yes. of Glacier Orb 12 2 satellite Strider, separated. and Glacier 2 satellite also has been separated. ऑब 12 स्ट्राइडर के पश्चात ग्लेशियर 2 को भी यान से पृथक कर उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। और इस घटनाक्रम में अगला है स्कूप 2 का सेपरेशन। Two satellites separated. यहाँ इसकी पुष्टि कर दी गई है। स्कूप 2 भी अपनी उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। Scoop Space 2 Globe satellite Hindi, has you can also check been your separated, membership has option, been वहाँ पे आपको confirmed. लिंक मिल जाएगा। Two more injection events to go. Arcade and Velox AM. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता है और अब तक सभी गतिविधियां सामान्य हैं। इस घटनाक्रम में अगला आर्केड तथा वेलॉक्स एएम का सेपरेशन हम देखेंगे। Satellite separated. Arcade satellite has been separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि कर दी गई है। आर्केड को भी उनकी उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। अब अंतिम उपग्रह वेलॉक्स एएम। Arcade carries iodine-based solid propellant propulsion module based on the Hall effect thruster for orbit maintenance during the low altitude mission. We It need is more developed by bandwidth for NTO in-orbit and in camera views, हाँ। collaboration with Inspire Consortium. Velox AM, the seventh satellite, is a microsatellite weighing 23 kilograms for technology demonstration I of think AM satellite separated. Cybertron, I guess they वेलॉक्स just gave एएम को भी wrong सफलतापूर्वक info then. उद्दिष्ट कक्षा में All स्थापित कर 7 दिया गया। satellites are separated. PSLV C56 DS-SAR mission accomplished. Handing over to mission director. और इन सभी 7 PSLV उपग्रहों के C56 has injected DSR primary satellite and 6 7 co-passenger satellites, Sandeep. satellites into the desired orbit. PSLV C56 DSR mission is fully accomplished. Bharat Here we have a successful mission announcement that PSLV C56 DS-SAR mission has been accomplished. As we take leave from you, please continue to stay with us for the address by Chairman ISRO Secretary DOS Shri S. Somnath and the mission executives. सभी 7 उपग्रहों को उनके उद्दिष्ट कक्षा में अंतःक्षेपण के पश्चात यह PSLV C56 मिशन पूरा होता है। और अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं। स्पीच नहीं होगा शायद, राइट? एंड एक और चीज, आई एम सॉरी, मैं यूजुअली मेंबरशिप्स एंड में दिखाता हूँ, बट मुझे वो भी कोड करना है, मुझे उसका भी वीडियो रेंडर नहीं करना है, तो या इतना ही है कि या कुछ है स्पीच होना तो चाहिए। स्पीच आइडियली कुछ चंद्रयान 3 का कुछ अपडेट मिल जाए। क्लियरली ब्रोशर वाज मिस्ड अप, कुछ और ही था ब्रोशर पे। ओके Good morning, all of you. PSLV C56, carrying 7 satellites, including the primary satellite DSR and 6 co-passengers, have been successfully placed in the right orbit. This is a mission of the PSLV for NSIL, and I want to congratulate the customers sponsored by Government of Singapore for having this mission on board PSLV and their continued faith in our PSLV for deploying the spacecrafts from Singapore. Congratulations once again to NSIL and Singapore satellite who have been on board around this mission, and a very perfect orbit that this time that we have got.
And we are going to have any exciting further activities on the PSLV stage after this. The PSLV 4 stage, which is currently in the orbit of the satellite, which is at almost 535 kilometer circular orbit in 5-degree inclination, that will be brought back to a lower orbit of 300 kilometers with an intent to have a lower lifespan of the stage being spent in the space, primarily to make sure that the space debris mitigation problems are addressed through our conscious efforts to bring back the PSLV upper stage in a controlled manner and to demonstrate that in this mission. So we are going to have that activity taking place further in almost another 1.5 hours. So we will get those confirmation much later. But at this moment, let me thank all of you for watching this mission early morning of this day and supporting us and congratulating us. And we want to specifically tell you that we are going to come back with another PSLV mission soon in the month of August or September, early September. So until then, let me thank you but before I leave, I would like to hand over the mic to the Chairman cum Managing Director of NSIL, who has been helping us to have the PSLV winning all the commercial launches. So over to Radhakrishnan. Good morning, everybody. First of all, let me express my heartiest congratulations to Team ISRO PSLV project across various centers for giving us such a marvelous and precise mission. I don't think customer could have asked for anything better than what we have just seen in today's mission. As you are aware, in this particular mission, we had 7 satellites from customer. The DSR, which was a primary satellite, a radar imaging satellite for all weather day-night imaging. And we also had 6 co-passenger satellites, again from Singapore, from NTU, NUS and other companies. So I would say this C56 mission has been the entirely Singapore mission. On this occasion, I would just like to recall 1 or 2 instances. If I look back our association with ST and DSTA way back in 2015, when they offered us the first dedicated mission called Helios 1. And since then, we have bagged almost 3 more launch contracts with Singapore, ST and DSTA. And today's launch has been the 4th dedicated launch for a single customer. I would say in the history of our PSLV launches for a commercial launches for international customer, a single customer coming to PSLV continuously 4 times for a dedicated launch has been a real record, and that shows the kind of trust the customer has laid on the teams here. I am aware Singapore is planning many more missions in the future, and they will continue to have trust on our services and the most reliable launcher PSLV that we have offered the services. I'm sure they will offer us many more opportunities for us to give them the best launch in the international community. And with this, I would like to congratulate the DSR and all the customer team for their successful in-orbit operations. Thank you very much. So this launch has been the result of the very dedicated and continuous work of the PSLV project team. So on behalf of the launch vehicle team and the PSLV project team, the mission director. Thank you, sir. Good morning to all, or rather a PSLV good morning to all, or more befitting, a ISRO good morning to India. Because early morning we have a very successful mission of PSLV, but before anything, a big salute to Team ISRO, because in the past, in the matter of 2 weeks time, matter of 15 to 16 days time, we have accomplished 2 major missions of ISRO, and that is because of simply because of the dedicated effort of Team ISRO. That is the sole reason, and I compliment each and every one of you for that. Coming to this mission, PSLV in its 56th successful mission, as you have seen here, has injected 7 customer satellites into the desired orbit. We started this campaign, integration activities at a new integration facility, PSLV integration facility, and moved over to first launch pad. Then onwards, all activities have been taking place very systematically, almost on something like clockwork precision. Yesterday we started the countdown, and countdown activities also went off very well without any observation, as if something like
you take a command from a textbook, execute it, that's all, and all the parameters were as expected. All this possible only because of the dedication of Team ISRO. And subsequently, we have seen that after automatic launch sequence at T0, what a majestic liftoff of PSLV, and each stage delivering whatever is intended of it, getting jettisoned and reaching the fourth stage. After attaining the required velocity and orbital conditions, all the 6 satellites, all the 7 satellites got out separated one after another. It was a very beautiful, fantastic sight to watch sitting there. But as our beloved chairman has indicated, we have not completed the mission. The primary mission, the primary objective of the mission is completed. And what can we do? It has become a habit, or PSLV is habituated to doing some experiments in orbit. We will not leave the terminal stage just to wander in the space. We will take control of that because as you know, last time also we have done this. That is, we have written poems, we have sung melodies in space, we have taken startups to orbit. All those things we have done with the spent PS4 stage. This time we thought we will do something different, and that is what we are embarking on after the completion of the primary mission. We are taking the PS4 stage back to another orbit, because this orbit, 536 kilometer, roughly 500 to 570 kilometer orbit, is very much in demand for many satellites. We thought we will not be wandering there. PSLV on its own decided that we will take the PS4 stage or the spent stage to another orbit, another lower orbit, for 2 purposes. One, as our chairman has told, to do our might, to do whatever is best possible to mitigate the menace of debris in orbit. Another thing is this orbit, this precious orbit will not be occupied with a spent PS4 stage and as a debris, but we will give space for other future satellites. These are the 2 objectives with which we are doing this experiment. That experiment is in progress, and definitely within another 1 hour, I am very sure we will be accomplishing that experiment also. And all these things have been possible, as I've told initially, it is because of the untiring, dedicated effort put in by Team ISRO, no doubt. All members of all centers have contributed. And we are getting excellent support from all our review forums, excellent guidance from all our review forums. That is what is visible in this view screens. And we are getting excellent, high quality, high reliable systems from all our industry partners. We are extremely thankful for that. And all our system development agencies, all our SR entities, all contribute to this mission. That is why everything went on as expected. And of course, our industry partners, I told, they deliver high quality systems, high reliable systems for us. This mission is a culmination of efforts put in by all of you, and also the support we get from our family, which we often take for granted, because without which we cannot manage this sort of missions. Now coming to our customer satellite, this satellite team, our Singapore team, has always been with us. And coincidentally, our previous mission also, we went together, we had a joyful ride to orbit, and they are enjoying the benefits of that. And as our NCL CMD has told, you have some more missions in future. I would like to imagine that we will take some 2 or 3 missions, 2 or 3 PSLV always ready, so that 2 or 3 missions of vehicles ready, so that we can always take you. We congratulate you on your achievements, sir, and we wish you all the best. Once again, best wishes to all of you for this mission. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, and I'm very excited, Mission Director there was. So thank you once again for watching this launch, PSLV C56 launch. Let me also offer from me the congratulations for all those partners in building PSLV from the industry, and also those who have been part of the integrating it into the subsystems and delivering it for us for this launch. And all of you know that the PSLV is now going to get industrialized, and in coming days we will be seeing fully industry-owned PSLVs being launched, and that we are targeting early next year. But this year itself we are going to have very exciting missions. The PSLV is going to be flying again. As I mentioned, we are going to have the mission of the Gaganyaan test vehicle, which is currently getting integrated. We are also planning to have the launch of the SSLV in its 3rd development mission, as well as the GSLV mission for launching INSAT 3DS. So we are very packed with our activity in this year. So until then, we announce the next launch. Thank you so much, and wish you all the very best.
ओके आई थिंक यहाँ पे हो गया। बाय बाय एंड गुड मॉर्निंग। आप जो सोने वाले हैं, उनको गुड नाइट। हाँ, आज मैं वो मेंबर का कोड नहीं लिखा, आई हैव टू राइट इट। So thank you to all members and new members who joined. Manu और हरियर just 1 month. Thank you। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद जय भारत।